Ashwini, please start. नमस्कार. महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहायता केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असणारा करिअर कट्टा या उपक्रमाअंतर्गत करिअर संधीचा ऑनलाईन महामेळावा. या महामेळाव्याचे आजचे हे 24वे सत्र. या प्रसंगी उपस्थित सर्वांचे मी अश्विनी नागपुरे मनपूर्वक स्वागत करते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून पदवीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आणि घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी व पालकांना उच्च शिक्षणात पाऊल ठेवताना महत्त्वपूर्ण बाबींची जाणीव व जागृती व्हावी यासाठी या उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात येत आहे. आज आपल्याला लाभलेले मार्गदर्शक आणि आहेत माननीय भूषण सर, जे AI टूल्स फॉर ऑल याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत. तर मी सरांना विनंती करते की कृपया विद्यार्थ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन करावे. Yes, over to you, sir. Yeah. Namaskar. Good evening to all. Thanks for your time and thanks sparing approximately an hour with us today for this session. I'm really honored that you have spared your time and you want to spend next 1 hour. So, my language of having this discussion with you is primarily will be English, but I can answer in Hindi and Marathi as well. So whenever there are any queries, doubts, whatever you have, please free to use the language you can speak, and I'll try my best to solve all of your queries in the language, maybe Hindi or Marathi, and try to resolve the issues. I have my support team with me, so maybe next time I have more command on Marathi as such, or maybe Hindi, and I'll be able to have a pure Hindi or Marathi sessions with you. So let's begin. There's a lot of buzz around AI, data science, machine learning, and other walks of AI engineering in past. And there are many all practical examples what we are seeing in everyday's life. So before even we begin these things to be discussed, let's assume that AI is not new. Artificial intelligence, data science, and machine learning is not new at all. This has been going from ages, at least I could say 4-5 decades. 50 साल या 50 वर्षापासून we are doing in indirect or an implicit way. The reason this is more popular because we are able to convert mathematical equations, laws of physics, equations written in chemistry into maths, and these maths is turned into software libraries and we can make programs. So we are not doing something new. We are not reinventing the wheel. This has been done in many times. Whatever AI has, the core of AI is nothing but the engineering mathematics or the mathematics or applied mathematics, what we study in the past in our schools and in our colleges, and we are able to transfer this thing into a software package, and hence we are able to make the applications. So this is then extended mathematics, extended physics, and extended chemistry, which turned into an AI. So there's nothing new which has come up, but it is now easy to implement. Any questions? I mean, you can stop me if the questions are there. Yes, sir. So ask somebody if anybody has a question. If not, I'll move to the other slide. Yes, sir. We will take all the questions last 10 minutes. Okay, perfect. Thank you so much. Yeah. Okay. So the welcome to the session of AI changing lives. So now what is AI? One thing is, what is AI and how it's going to help us? AI is an artificial intelligence, but it's an intelligence which is synthetically generated by human beings. So this cannot be smarter and spontaneous like human beings. And it will never replace humans. And we try that it never replaces humans because finally it will be controlled by us for our betterment, for society's betterment, and on top of to betterment of the nation first, right? With this session, I'll tell you AI. I'll try to explain AI in a very non-technical language,
and a very easy language, so all of you can understand and how it is being implemented in daily life, and how it can better our lives, because finally you have to better our lives, science, technology, everything is to better our lives. So we're going to do a session completely on this. So what I'll do is I've just grabbed one picture where there's a farmer, such an important component of our lives, such an important component of the whole country's economy. And this farmer, you could see, is having a screen in front of him. हाँ, शेतकरी है, ये किसान है एक, और इसके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन है, एक वर्चुअल स्क्रीन है जिससे वो ये पता कर रहा है कि इस साल का मानसून कितना है, हाउ इज द मानसून प्रेडिक्शन, एंड वो मानसून के प्रेडिक्शन के हिसाब से ही इज चूजिंग हिज crop to be sowed, which seed he has to sow, and which crop he has to harvest that year, so he can get better market rates, get bigger markets, and he can earn and make money. Now for that, to support him, what the monsoon prediction, we have monsoon department, uh, what crop he has to uh, sow, that he goes to the agriculture department and other experts, and then what market, you have all these Sahkari committees and all, where you sell and you get the market rate declared by government. So for that, if he uses an AI agent and ask him what is the what is the monsoon prediction, if the monsoon is average, good, bad, what crop he has to sow, where he will get good seeds, where he will get good pesticides. For that, if you use an AI agent, it will give all the information, because this AI agent is nothing but built by all these scientists, agriculture experts, market guys, seeds guys, and he'll get this in a flick of an hand on a mobile application somewhere in a remote part of the country or remote part of the Maharashtra. So all this intelligence of all these different people, which make this agriculture ecosystem, ideally is done by an AI agent whose intelligence is feed or created by people who belong to the agriculture industry. So again, this is handy, this is quick. If there is a history of 100 odd years, this AI agent is built on 100 years of data, which is not easy for one guy to remember, look at the records, look at the disk where it is stored, look at the registers. Rather, this agent will tell everything. So this is the application. I've got this slide up where how this application is actually working, actually been designed. Any questions here, guys? Okay, so what we have on agenda today, we'll say what is AI, what is the introduction, a simple introduction, how AI is used in daily life, what are AI tools, what are non-coding careers. So many of your audience may not be from an engineering background or a coding background. How you ideally will use AI and make careers on it. What are the essential skills which are needed for to be an AI expert or an agentic AI, and then we'll have a QA session on this. Can I take the next slide? Yes, sir, please. Thank you. Now, what is an AI? It's a simple explanation. What is an AI? So AI is a computer program doing tasks that are typically require human-like thinking, like recognizing speech, making decisions, or learning new things. In simple terms, AI is equal to smart software that keeps learning and improving. And what is the key point? No requirement for deep programming knowledge to benefit from or contribute to AI applications. So AI एक आइडियली सॉफ्टवेयर है. अब एआई कोई सॉफ्टवेयर से अलग नहीं है, सॉफ्टवेयर उन वेगळा नाही आहे. एआय एआय सॉफ्टवेअर इंजिनचाच एक पार्ट आहे, एक भाग आहे. आणि आता त्याच्यामध्ये काय थोडी इंटेलिजन्स टाकली आहे. सपोज आज आपण स्विगीचे ऍप्लिकेशन यूज करतो, वी यूज अ स्विगी ऍप्लिकेशन. स्विगीच्या ऍप्लिकेशनला आपल्याला सपोज काही फूड ऑर्डर करायचं आहे, इफ यू हॅव टू ऑर्डर सम फूड, आपण त्याच्यात मेन्यू बघतो आणि मेन्यू मध्ये आपली चॉईसची डिश सिलेक्ट करतो आणि त्यानंतर ती सिलेक्ट करून कार्टमध्ये टाकून पेमेंट करतो. आता याला सपोज एआय एजंटने रिप्लेस करायचं असेल तर मी फक्त एक कमांड टाईप करेल या वोकल स्पीच या एक इमेज टाकेल आहे. सपोज आय वॉन्ट टू ऑर्डर पुरणपोळी,
तर आय जस्ट पुट एन इमेज ऑन पुरणपोळी आणि मी खाली फक्त टाईप करेल की मला बेस्ट रेस्टॉरंट मधून पुरणपोळी ऑर्डर करायची आहे. तर ह्या एजंट सगळं आपल्याला डेटा शो करेल आणि पेमेंट पर्यंत आपल्याला येऊन थांबवेल. त्याच्यानंतर परत आपल्याकडे कंट्रोल येईल, बिकॉज पेमेंटचा कंट्रोल एआय ला दिला तर आपले सगळे बँकिंग आणि सगळ्या डिटेल्स एआय एजंटकडे जातील. त्याच्यामध्ये इट इज डेंजरस. म्हणजे त्याच्यात 60 रुपीजची पोळी 600ची बनवू शकते, 6,000ची बनवू शकते, राईट. तर तिथे काय होणार आहे की तिथे स्टॉप लावेल एआय एजंट आणि तो एक सॉफ्टवेअरच असणार आहे. तर आता बहुतेक खूप साऱ्या ऍप्लिकेशन जे आहे, जसे मेक माय ट्रिप आहे आणि अजून ऍप्लिकेशन्स आहे, तिथे त्यांनी एक एआय एजंट दाखवलेला आहे. तर रादर मी गुगल सर्च करून एक आयटनरी माझ्या सपोज ट्रॅव्हलची बनवली, आता मी ती गुगल सर्च थांबवून रादर त्या एआय एजंटला सांगणार आहे की मला अज्युम करा मुंबई ते दिल्ली ट्रॅव्हल करायचं आहे, मला चीपेस्ट अकॉमोडेशन, चीपेस्ट ट्रॅव्हल हे रिकमेंडेशन द्या आणि मला त्याची बुकिंगची प्लॅनिंग करून द्या, म्हणजे बुकिंगचं पेमेंट नका करू. मग ते तुम्हाला ट्रेनचा पाच सांगतील, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी या स्लीपर क्लास सिलेक्शन सांगणार आहे ॲज पर युअर बजेट. हॉटेल्स सांगतील आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला मेक माय ट्रिपच्या साईटला नेतील या वॉट एव्हर साईट इट इज, आणि मग तिथे जाऊन तुम्ही पेमेंट करा. फायनली हे सॉफ्टवेअरच आहे आणि या सॉफ्टवेअरशी इंटरॅक्ट करायचं आहे. आता ते सॉफ्टवेअर गुगल आणि बहुतेक खूप सारे सॉफ्टवेअर्स आहे जे एआयचे असे इंटेलिजंट मॉडेल्स तयार करतात, या अल्गोरिथम्स तयार करतात आणि त्याच्याशी इंटिग्रेटेड, आणि ते सगळं जे काम माणसानी या बुकिंग एजंट या ट्रॅव्हल एजंटनी केलं पाहिजे, आता ते हे एजंट्स करतील. पण त्याच्या जी इंटेलिजन्स असेल ते माणसंच कंट्रोल करतील. आणि त्याच स्टेटमध्ये एआय ला ग्रो करायचं आहे की ह्युमन्स आणि माणसांची व्हॅल्यू कमी नाही होईल. वी कॅनॉट डिस्पेन्स ह्युमन्स. It has to be a software which will run and controlled by humans, right? याला कोड करायला you don't need a lot of knowledge, but this is wrong. I feel you need huge programming knowledge in the sense of at least knowing the concepts at the place. Otherwise, software development is very easy nowadays. You don't need lot of knowledge for that. Okay. Now, how does AI work? AI कैसे काम करता है, AI कैसे काम करता है, तो उसके लिए what all you need? आपको उसके लिए डेटा चाहिए. सपोज मैं एक एआई एजेंट ट्रैवल कंपनी के लिए बना रहा हूँ, तो मेरे को डेटा चाहिए होता है. उसके बाद एक्सपीरियंसेस, ट्रायल एंड एरर. अब एक्सपीरियंस मतलब जो एप्लीकेशन, अभी जूम पे वी आर ऑल टॉकिंग, सो वी आर हैविंग एन एक्सपीरियंस हाउ यू आर टॉकिंग टू जूम. यू कैन सी मी, आई कैन सी यू, आई एम शेयरिंग अ स्लाइड, दैट्स बीन हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस. वर्क कैसा करता है एआई? मग हेडफोन आपण लावून घ्या, कानात माटून घ्या. Somebody is talking at the back. Yeah. Sorry, sir, for the disturbance. Ask folks. भूमीचा नंबर नाही माझ्याकडे. We're good to go? Yes, sir. Sorry, sir, for the disturbance. Okay, no problem. ठीक है. Perfect. All right. So how does AI work? AI, exactly how it works. I've told you we need data. AI, data science, सगळं डेटा सेंट्रिक है. This is a data centric world. डेटा के बिना एआई का कुछ काम नहीं है, राइट? सो बहुत ज्यादा डेटा लगता है. उसके बाद जो एआई सिस्टम होते हैं उनको उन डेटा पे ट्रेन करना पड़ता है. सपोज आज किसी एआई एजेंट या एआई मॉडल को मैंने बहुत सारे बर्ड्स की इमेजेस दी और मेरे को उनसे बताना है की गेट मी पीकॉक्स, इसमें से मोर निकाल के दो, याच्यातून मोर काढून द्या, मोर और पीकॉक के पिक्चर्स चाहिए. तो व्हाट विल डू इज, पहले तो इसके एआई मॉडल, अब ये एआई का मॉडल मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती है जो डेटा लेती है और वो सीखती है. तो इसमें जो कंसेप्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का होता है. अब ह्यूमन ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूरल नेटवर्क से आया है. अब न्यूरल नेटवर्क्स यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के होंगे या इस वर्ड को जानते होंगे, न्यूरॉन्स अपने ब्रेन में होते हैं. तो अगर उस ब्रेन के न्यूरॉन्स को अपन ने मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और उसको डेटा दिया, तो ह्यूमन के ब्रेन जैसे ही बिहेव करेंगे. एआई मॉडल में भी ऑलमोस्ट उसी तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशंस से बनते हैं और उसके अंदर एक थिंकिंग की पावर आ जाती है. अब थिंकिंग में कैसा है कि
आपकी मेमोरी जब आप छोटे से बड़े होते हैं, लहान मोठे होता है, जब आप व्हेन वी ग्रो फ्रॉम यंग, फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू अ टीनेज, एट द एडोलसेंट एज, एंड व्हेन वी ग्रो यंगर, आवर ब्रेन के न्यूरॉन्स की पावर और स्ट्रेंथ भी चेंज होती है. Because a memory of a child is much better than a memory, say what I have today, because that grasping is much faster. बट विद द टाइम अपना डेटा आता है तो फिर अपना लेटर डाउन द लाइन अपना इंटेलिजेंस काम नहीं करता है, अपना एक्सपीरियंस काम करता है. सो इफ आई एम, माय एज इज 42, what I have learned is of 42 years of experience, and somebody half of my age have faster brain than me, faster thinking, faster grasping. But maybe his experience does not have, because he has not seen the scenarios what I have seen in last 40 plus years. मुझे 20 वर्ष पायल है, जो 20 साल मैंने देखा है और एक्सपीरियंस किया है, वो 20 साल आदमी को नहीं, क्योंकि टाइम वो क्रिएट नहीं कर सकता. सेम विथ एआई मॉडल्स होता है. एआई मॉडल्स के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशन जो बनाई है, वो पहले कम डेटा पे उसकी इंटेलिजेंस अलग होती है, लेकिन जैसे डेटा उसके पास आता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाता है. तो अभी उसके पास सपोज मैंने बर्ड्स की इमेजेस डाली, जिसमें 15 बर्ड्स है. अब 15 बर्ड्स में से एक पिकॉक निकालना बहुत ईजी है, राइट? लेकिन बर्ड्स बढ़ गए, 40 हो गए, तो फिर एक पिकॉक, मतलब प्रोबेबिलिटी उस पिकॉक की निकालने की और ज्यादा हो जाएगी. लेकिन उसके पास डेटा इतने टाइप के आ जाएगा कि विद द टाइम वो पिकॉक उसमें से निकाल पाएगा. आई हैव इमेजेस ऑफ ऑल द बर्ड्स, राइट? उसके बाद उस मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है. तो ये इसमें जितने उसको डेटा देगा वो ट्रेन होता है. आपका जो टिकटिंग सिस्टम है ना इंडियन रेलवेज का, उसमें पहले एक रिजर्वेशन का प्रेडिक्टर आता था कि आपने आपका आरएसी नंबर डाला तो वो प्रेडिक्टर बताता है कि आपकी टिकट कंफर्म होगी कि नहीं होगी. उसका परसेंटेज आता है. यू माइट हैव यूज्ड इट. पर अब क्या हो गया है कि वो मॉडल बहुत एक्यूरेट हो गया है. मतलब आज अगर मेरी वेटिंग लिस्ट, सपोज से फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई, अगर मेरी वेटिंग लिस्ट 35 है, तो वो इतना एक्यूरेट हो गया कि मेरे को मॉडल बताता है कि आपकी 100% टिकट कंफर्म हो जाएगी. जबकि 35 वेटिंग इज अ वेरी हाई वेटिंग नंबर. पर उसमें इतना डेटा फीड किया लोगों ने, इतना उस मॉडल को ट्रेन किया कि अब वो बहुत एक्यूरेट हो गया है और आपको प्रॉपर प्रेडिक्शन दे रहा है. उसके बाद मॉडल बिल्डिंग में आपको वापस मैंने बताया कि मैथ्स के ही इक्वेशंस के मॉडल बनाना है, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होती है मॉडल्स बनाने को. सी प्लस प्लस सी भी कर सकते हैं, जावा भी कर सकते हैं, पर पाइथन में ज्यादा मैथमेटिकल लाइब्रेरीज है, इसलिए पाइथन यूज होता है. देन यू हैव प्रेडिक्शंस एंड एक्शन. एक बार मॉडल ट्रेन किया तो वो आपको मानसून प्रेडिक्शन कर सकता है या आपकी टिकटिंग प्रेडिक्शन कर सकता है. और ये बार बार उसको इम्प्रूव करने के लिए जो उसका आउटपुट आता है वो वापस उसके इनपुट में डालते हैं, जिससे वो और स्मार्टर होता है. अब आपको नीचे एग्जांपल है, an AI to recognize cats by showing 100 cat pictures, eventually it learns to identify new image of cat even if it has never seen it before. तो अब मॉडल इतना स्मार्ट हो गया है कि मैंने उसको कैट बोला ही नहीं है और वो फिर भी बता सकता है कि ये जो सारी इमेजेस है वो कैट्स की है. तो दैट्स द इंटेलिजेंस गेट्स क्रिएटेड. ओके, अब एआई कहाँ कहाँ यूज होता है, यू कैन सी दिस. सो एंटरटेनमेंट में अभी आपका यूट्यूब और स्पॉटिफाई एंड नेटफ्लिक्स में, if you guys are using it, sees that it gives recommendation. Even YouTube may you see that when you are browsing something. So if you are pattern to browse your YouTube, so if you are listening to songs and there's a pattern, if you are listening to 90s songs or say 80s songs, वो आपको वही रिकमेंड करता है. और कभी कभी तो मेमोरी उसकी इतनी शार्प हो जाती है कि वो एग्जैक्टली वैसी मैचिंग करता है जैसा आप सोच रहे हो. तो डिपेंड करता है आदमी के सोचने पे. फॉर मी आई कैन से दैट यूट्यूब जैसा मैं सोचता हूँ वैसा काफी सोचने लग गया है, और मैं रैंडम सर्च भी करता हूँ तो भी ऐसे रैंडम मेरे को रिकमेंडेशंस देता है. द काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस यूट्यूब गिव्स मी which are very similar that the way I'm thinking, and you might have found it with yourself as well, that something you're thinking, you get it. If you're talking about a pizza with somebody, the next recommendation you get on anything you're browsing on net is about a pizza. So make sure that you don't let that machine or that AI take your mind. You do random searches always, because we don't want to let machines learn that how we are living our lives, because there's a huge privacy issue as well. So always keep confusing these guys. It cannot be so smart. ट्रैवल मैप्स में ऑब्वियसली रिकमेंडेशन है. इफ आई गो टू 5 डिफरेंट प्लेसेस इन अ डे, मेरा गूगल मैप्स, मैं सुबह जब मेरी कार को ऑन करता हूँ तो वो बताता है यहाँ जाना है. तो एक पैटर्न उसने पकड़ के रखा है कि इफ आई गो टू ऑफिस, वो ऑफिस का एड्रेस देता है. नहीं तो इफ नॉट, इफ आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, इट गिव्स मी दोस सजेशंस. बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन, चैटबॉट्स फॉर कस्टमर सर्विस, यू कैन सी दैट चैटबॉट्स हैव कम अप.
एजुकेशन, अब ग्रामरली करके एक टूल है जो अब आप टाइप करते हैं तो आपके ग्रामर करेक्शन करता है। हेल्थ केयर, हेल्पिंग डॉक्टर्स फॉर डायग्नोसिस मेडिकेशन, ये उतना लेवल पे अप्रूव नहीं है क्योंकि यू कैन नॉट रिप्लेस डॉक्टर, बट इट्स अ रिकमेंडेशन। Instagram filters, I don't know, you guys are on Instagram, on Facebook, I don't use that, so you see how it is. Job search, LinkedIn, job marking, yeah, this is pretty much through. Alexa और Google Assistant, Siri भी बहुत improve हो गया है क्योंकि पहले voice patterns वो ले नहीं पाता था, लेकिन अब if you speak, it has learned that okay, you know, somebody is speaking, right, and you understand it's you who are speaking. सो आपने बोला बॉक्स और मैंने बोला बॉक्स, और आपका अगर वो एलेक्से का एजेंट है तो आपका बॉक्स वो जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा क्योंकि आपकी आवाज रोज सुनता है। मेरे को नहीं हो पाएगा, मेरा एक्सेंट अलग होगा, मेरा लिंगो अलग होगा। Even you're from arts or commerce, these tools are designed with your life and mind. That's fine. I mean, it does not see that, you know, I have a, you know, I'm from a technology background and you guys are from, say, from a police department or from any other departments. It does not, you know, make a difference. Everybody's same for him, you know. What are the different branches of AI made? I mean, machine learning, we have been talking about machine learning, एक natural language processing है जिसमें अब machine learning है, you know, अगर एक कोई compressor है या कोई एक reactor है, एक या furnace है जिसके अंदर suppose iron को melt करते हैं, तो वो मशीन लर्निंग का मॉडल वैसे बनाओ तो इट बिहेव्स लाइक अ मशीन, क्योंकि वॉट एवर वी डू ऑन मशीन, एक्चुअली उसको पहले मैथ्स की इक्वेशन बनता है। अगर अपने को एग्जैक्टली सपोज एक आपके यहाँ पे फर्नेस है और फर्नेस सपोज आयरन को मेल्ट करता है, अगर उस फर्नेस की मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई तो अपन आयरन की भी का मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो उससे अपने को पूरा फर्नेस का बिहेवियर पता चलेगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीरी और आपके गूगल टॉक क्लाइंट में जहाँ पे आप बोलते हो और वो एक्ट करता है, सो चैट जीपीटी है, गूगल ट्रांसलेट है, यू नो, यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर। कंप्यूटर विजन आपको है, यू नो, फेस आईडी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये भी फीचर्स आपने फोन में देखे होंगे। रोबोटिक्स, यू नो, दिस इज अ बिग टाइम थिंग नाउ। रोबोटिक्स, robots is a different world altogether. We'll just park it there because वो टेक्नोलॉजी बहुत अलग है। एक्सपर्ट सिस्टम मैंने बोला एग्रीकल्चर का, मैंने सिस्टम बनाया जो रिकमेंड करेगा, और स्पीच रिकॉग्निशन कन्वर्ट्स वॉइस इनटू टेक्स्ट, ये तो आप देख ही रहे हैं। एलेक्सा और सीरी में लैंग्वेजेस चेंज होती है, आप जो बोलते हो टेक्स्ट में होता है। सो वी आर बीन सीइंग दीस थिंग्स। नाउ विल गोना टॉक अबाउट बस्टिंग एआई मिथ। एआई जॉब्स ले लेगा क्या? बिल्कुल नहीं लेगा, ले ही सकता नहीं है। डिपेंड कि आप उस मॉडल को कितना ह्यूमन लाइक करोगे। रादर इससे जॉब्स क्रिएट होंगे क्योंकि इससे क्या एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो जॉब्स तो कहीं जाने नहीं वाले। रादर देन व्हाट इट विल हैपन इज, सपोज कोई एक यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी खोलता है खुद की, तो पहले ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए आपको वेबसाइट चाहिए थी, उसके लिए आपको वेबसाइट का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता था, देन यू एम्प्लॉय पीपल हु विल टेक द कॉल्स फ्रॉम द कस्टमर्स। फिर आपका बैंकिंग हो गया, आपका यू नो इटनरी क्रिएट करना, ये सारे 7-8 जो रोल है, रादर वो रोल तो वही रहेंगे, लेकिन आप जब इन एजेंट्स को और इन एआई टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो आप पहले 15 कस्टमर कैटर करते थे, अब आप 50 कर सकते हो या 30 कर सकते हो। सो दिस विल हेल्प इन ओनली इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। जॉब्स जाएंगे? आई डाउट, जॉब्स नहीं जा सकते, जॉब विल नॉट गो। एआई रोबोट्स है? रोबोट्स बिल्कुल नहीं है। रोबोट्स इज अ डिफरेंट stream altogether where there is a lot of mechanical things are involved. Coding, no, you don't need code, but yeah, partial level of some lines you have to write. Uh, you ideally don't code a lot, you know, you create workflows and all, which is very handy. It's not so tough. So myth, you know, what are the myth busters? It's not going to take jobs. These are not robots. And ideally you must code. I should not say that you cannot, you have not to be coding, you have to code, but those are very human like languages, you know. A day would come, rather you can code in Marathi and it converts into Python language, so that's not a challenge. One interesting saying goes, AI won't take your job, but someone who knows use, that's fine. I mean, that's more of for writing sake. अब AI से ये करियर कितना बनेगा एंड ऑल, I would not really amplify this slide because we don't want, India, we don't want AI to be taking us. We are an economy where everybody should get a job.
We have a very formidable, strong economy. So we should use AI where it should save human lives. It should benefit the society. It should increase the efficiency. Economy and all is for the nations who thrive on this. We are an agri nation, proud to be very proudly saying we are a very agri nation. We have an amazing society. So we should use AI in uplifting our society, uplifting us. Economy and all is nonsense, and I don't believe in all these things. ठीक है, I mean, it's maybe for the world it is fine, but we, whatever we have been doing because of humans, because of our engineers, our farmers, our army, our people who are, who's spending their each hour on helping each other and society. So I don't know, economy and all is maybe may not be the scope of this discussion. These are the things where we can ideally use. Can we have a pause here and ask audience to raise questions if they want to? Sure, sir. But as usual, students ask all the Okay, questions. okay, that's Huh. okay, perfect. That's fine. Any chartered accountants and folks from commerce industry? I mean, this is very much understood slide. Where AI can make a difference. Accounting, automation, tax filing, compliance, risk detection, cash flow forecasting, client communication. AI can do everything, but I'll tell you what happens is whatever AI model or intelligence, like fake bills, if somebody is having fake bills, AI can do it, but you have to create these agents according to your industry. Suppose I am running a company, I cannot ask Google to do this because all my confidential information will go out. Cash flow forecasting, again, cash flow is very confidential to me, private to me. I cannot throw this out to a Google or a chat GPT. I have to create my own. So everything, I mean, me working on these technologies for all these sectors, we are trying to make these clients, AI agents, data science engineering solutions just locally deployed. So we're not here, everything being given to Google's. So these are the things where you can have AI. It helps you in decision making, insights, advisory and client experience, efficiency and automation, so on and so forth. So you can, it's pretty self-explanatory. If you can read through this, you'll know what it is, and maybe keep your notes aside, and you can circle back when I end this slides, and then we can talk on this. Yeah, I'll move to the next slide. This is very interesting, and we are working on this. So if any advocates or attorneys or who are working in the legal side of things, there are 100 pages in a case, and you are a law student. If you want to have certain things in that document, that okay, get me what the decision was made, what were the arguments from both sides. You are not supposed to read each and every page, each and every line for this. You just ask an AI agent and it will just extract all these details for you. That's the legal research. And if there is a contract, if somebody is into legal side of contracts, you can just have that contract, have your AI agent talk to that contract, and it will give all the things which you need. We are making these solutions for our customers, law firms, legal entities. Case prediction, AI uses previous judgments to indicate probabilities. See, this is very interesting. If there are 10 cases of, say, fraud or forgery, and if there's an advocate, you just pump in data and then see what the judgment could be happening. So if there are 10 such cases in which 5 was with the applicant and 5 was against, now this ideally will summarize the judgments and the evidences and all those corresponding things with that case, do mathematical driven or machine learning or AI driven judgment on that and give it to you. See, but this is very subjective. Understand this, because judiciary law, I mean, they will not ideally try to let an AI judge overtake this. So this is very subjective. It can give you references, but it will not tell that, okay, with this you have a high probability of winning the case. I feel no of the attorneys would really agree to this. Automate intake, FAQs, and appointment schedule. This can be done. I mean, this can be done in anything. So this is a value add what ideally is provided
for the law professionals. Okay. Now AI for HR professionals who are all into HR profession, who are working for various recruitment agencies. If you get a resume and there is a job requirement for, say, for an architect, uh, you have this agent where it will tell that whether this is best fit or not. It's going to tell the sentiment analysis. If you are going a live interview, if you're taking some live interview, it will tell how confident this guy is because of his voice, because of his pattern of answers. You can see whether he's confident or not. So all those attributes. Uh, then you can, if you want to make a project and you want to hire people, this HR agent, AI agent will tell you, okay, this work is for 6 months. I have to have 2 developers, 2 QAs, 2 architects, and it applies to anything. If you want to make a building, it will tell, okay, you need 1 architect, 2 architects for, say, 5 engineers, 2 workers, and so on and so forth. So this will help in doing all these things to you. Okay. The future of HR leader collaborates with people and algorithms. Same thing again. AI in business and marketing. How AI is used in business and marketing again. Companies analyze consumer data, tailor campaigns to individuals. So there's a lot of marketing nowadays. Whenever you are browsing internet or seeing a YouTube video, you get recommendations of clothes, you get recommendations of food, you get recommendation of shoes. That is all targeted AI driven marketing according to your user pattern. So when you're using your phone, you do searches, you do purchases, all the data in your, and you also speak a lot. So all these mobile phones are hearing what you're talking. They compile all this data and then start giving you recommendations. So assume a festive season, Dasara is coming, and I have talked about kurta or pajama with somebody. That keyword is captured by your phone. It goes to Google, and then all other searches you do. If I go to say any of the merchandise store who sells kurta pajama, and then whatever activities I do, I go to Insta and see designs of kurtas. I go to Google, it gets a pattern, and then assume, if I have to buy this from Manyavar, they will start sending me Manyavar marketing ads that, okay, buy a kurta from Manyavar, because Manyavar has paid them that somebody who searches kurta, my ad should be first. So that's the way it is. That's a personalized marketing. It according to your user behavior on your phone, your laptops, and whatever you do. Customer service, yes. Now you know when you are get you this nasty fake calls, you see, there's a robot who is talking or there's a machine who is talking. So that is all AI powered now. So these guys have left this fake and nasty calls you get is they have put AI powered chatbots to talk to you, so you can abuse and nobody's affected. AI spots patterns and makes the prediction faster than humans. Yeah, then that's the way it is. Personalized marketing is only a result of data driven decisions. Inventory, yeah, when there is a festival season, say now Gauri Ganpat is there, you see that you get a lot of ads about these products, on Blinkit. Now this is as per the season. Dashara, you will get ads for Dashara and so on and so forth with Diwali and all this festival seasons coming through, right? This is nothing but inventory management. So uh, it sees what's the demand by various users and customers on their mobile phones, and then they got to know, okay, we need a high volume of coconuts in coming season. So they will tell that particular company, okay, buy more coconuts, have more coconuts, make more Eastern sticks or more garlands. This is done by AI itself. Banking and finance, yeah, we have been using AI in banking and finance. Fraud detection, this is not visible to us. This is at the back end. Mobile banking, AI power features like mobile check deposit, recognize. See, I'm telling you, this has still been implementation. Nobody's taking, and financial decisions that happens in backend. We don't, as a user, see that. So financial decision happening, mobile banking and fraud detection, it is all in the background. We don't understand it. Depositing checks and all, this is also happening. But everybody is not taking this up. India, it is still not so open, and we don't want it to be open. There has to be some human feedback as well. So media and journalism, see, this is very dangerous. This is a hazard. So
what has happened in Hollywood a couple of months back or years back, I feel a year back, when we write scripts of the movies. So assume, we give some characters and that script is automatically generated by AI. Earlier, there were writers who used to write movie scripts, write songs. Now this is really dangerous. What's been happening is somebody, if you might have heard, have changed the climax of DDLJ or 2 months back. What they did is they converted a movie into a transcript and fed it to an AI model, and it changed the whole climax of the movie, right? So in that, you can do these things, which is very dangerous. So this can take up jobs where you don't need writers. So that creativity is being captured here, which is dangerous. So content creation, yes. Research assistant and personalized news. This has been happening. This personalized news, if you are reading Lokmat or Sakar or whatever, you get information. So that's not common. So if I'm uh, finding a news of my choice, it will suggest me only that news. And if you are more looking towards sports, I'm look more towards politics, so I'll get more news on politics and less on sports, and you get more sports news. So this has been happening. But that top T, content creation, research assistant, I feel research assistant is still okay. Content creation is dangerous. It is taking jobs of writers, it is taking jobs of script writers, song writers, which is dangerous. So this has to be controlled. It loses its creativity. AI in healthcare. Yeah, that's there. I mean, telemedicine, public health, personalized treatment. Again, it is all regulated. You don't have such solutions, at least used in India, right? Uh, can we break here? We'll have the session tomorrow, and we can have a Q&A now. It's 6:38. Yes, sir. Yeah. No problem. Perfect. पुढे पण आहे का अजून? There are two. There are at least, I suppose, one deck is more there. Two slides are there. How much? 15 slides are there. Yeah. ओके. वी कॅन 1-2 स्लाइड्स आपण घेऊ शकतो. Okay, perfect. I'll just stop my video. I have a bandwidth issue, so I'm stopping my video. Perfect. AI in healthcare, early diagnosis. So there is a research now where AI is helping in cancer. कर्करोगासाठी, कैंसर के लिए अर्ली डायग्नोसिस एआई यूज हो रहा है, जिससे कैंसर पहले ही पता चल जाए रादर देन पीपल डिटेक्ट इन थर्ड स्टेज. बिकॉज कैंसर जो होता है, समटाइम्स इट इज वेरी वेरी non asymptotic. I mean, it does not leave symptoms, and suddenly people find they are into the third stage or last stage. AI is helping that. They are able to pre-diagnose. They are helping in pre-diagnosing the cancer. This has been working actually. Telemedicine, yes, this is working. Actually, I worked on a project in COVID where with all these patients' reports, I was able to make a recommendation of a medicine, but it has to be regulated by doctors. I cannot make it live. So this AI telemedicine is also working. Public health AI monitors data in real time to detect disease outbreaks and predict health trends. See, this is all subjective again. Early diagnosis and personalized treatment. This has to be controlled by doctor. डॉक्टर इसमें इंटरमीडिएट काम करता है. वो ये डॉक्टर को रिकमेंडेशन देता है, फिर डॉक्टर आगे आपको बताता है. कोई भी सॉफ्टवेयर अभी जो मोबाइल ऐप्स है या वेब ऐप है, जो भी ऐप स्टोर पे है, वो रिकमेंड नहीं करती है. रादर जो ऑनलाइन मेडिकल के ऐप्स है, जहां आप मेडिकल स्टोर है, जैसे 1mg हुआ, जहां से आप ये दवाई ऑर्डर करते हैं, मेडिसिन ऑर्डर करते हैं, वहां पे भी नीचे डिस्क्लेमर लिखा रहता है कि प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से विल सेंड डिटेल्स. आइडियली हम ओन नहीं करते इसको. वी आर नॉट ओनिंग कि इससे आप ठीक हो जाएंगे. तो कोई ओनरशिप नहीं लेता है हेल्थ केयर में, वो डॉक्टर के पास होती है ग्लोबली. तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम हो सकता है, लेकिन ये खा के ऐसा होगा ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता. सो ये हेल्पिंग सिस्टम है डॉक्टर्स और मेडिकल फर्टिलिटी के लिए, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर आप और मेरे जैसे लोग इस पे रिलाय भी नहीं करेंगे, और ऐसा कोई सोल्यूशन भी नहीं बना है. अब ये एआई में आपका करियर कैसा बनेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर से, ये डिपेंड करता है कि आप
कौन सी इंडस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि मोस्टली नॉन जो ऑडियंस होगा टेक्नोलॉजी का होगा नहीं होगा, आई डोंट नो इट, पर मे बी आप किसी कंपनी में जाएंगे तो एआई एज ए टूल के लिए बहुत टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं चाहिए, इस पे आपकी लैंग्वेज पे कमांड है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश पे कमांड हो, तो आपको वो कमांड प्रॉम्प्ट करनी है एआई एजेंट पे, वो इतनी आसान होना चाहिए कि उससे आपको क्विकली रिप्लाई मिले। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है या आप ट्रेनर है या आप कंसल्टेंट है, तो आप जितना ट्रेन होंगे इस टूल पे उतनी आपकी एफिशिएंसी है। फिर आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से फिर ये सारे रोल्स क्रिएट होते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन रहे हैं, या आप किसी पिक्चर पे सपोज कुछ एनोटेट कर रहे हैं या कुछ उस पर लेबल कर रहे हैं, या कंसल्टेंट बन रहे हैं, या आप डिजाइन कर रहे हैं, आप कोई इसमें आप में पेंटर होगा या कोई डिजाइनर होगा। तो डिपेंड्स ऑन द एआई स्किल्स। तो ये पोजीशन बाद में आएगी, पहले आपको एआई के क्लाइंट्स और एजेंट सीखना पड़ेंगे। uh, this is more from the coding techniques. We can take this later, we are open for questions. Yeah, thanks. येस, थँक्यू सो मच सर. तुम्ही खूप उत्तमरित्या आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि एआय टूल्स फॉर ऑल अशा या विषयाअंतर्गत आजचं जे सेशन झालं त्यासाठी आपले खूप खूप आभार. तर आपण सर्व विद्यार्थ्यांकडे जाऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जे काही प्रश्न असतील ते तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकता किंवा हँड रेज करून सरांशी प्रत्यक्ष संवादही साधू शकता. ओके, sir, we have a question from Sujit Maitre sir. He's asking that, sir, any courses you recommend for arts and commerce teachers and also for students? तुमचा तसं मला ईमेल द्या, मी तुम्हाला डिटेल लिंक करणार शेअर. आता काय, दे आर मेनी सच कोर्सेस नो, वी आर इन ड्युअल लँग्वेजेस. मेनी ऑफ द व्हिडिओज आर मेड इन हिंदी ॲज वेल, हिंदीतही आहे आणि त्याच्या खाली मराठी ट्रान्सक्रिप्ट पण येते. तर मला तुमचा ईमेल द्या, मी आय सेंड यू दोज लिंक्स, डोंट वरी. वी विल आय सेंड यू लिंक्स, आणि ते कोर्स करता येणार आहे तुम्हाला. काही असा फार काही प्रॉब्लेम नाही आहे त्याच्यात, खूप ते इझी आहे. आणि आता एआय एजंट्सला मराठी कळते, तर लँग्वेज इज नॉट अ बॅरियर. लँग्वेज कॅनॉट बी अ बॅरियर, ॲटलीस्ट फॉर इंडिया. So I'll send you those details. Yes, thank you so much, sir. Then I have a question. I am a background of language student. So what is the future for career in languages in the field of AI? Basically, I am learning Sanskrit language. Okay, good. So see, I'll tell you now, the one thing what has happened is we are quite open to language localization. म्हणजे भारतात काय आहे की यू हॅव टू लोकलाइज द लँग्वेज, बिकॉज आपली पॉप्युलेशन एवढ्या लँग्वेजेस बोलते, तर सगळ्या ऍप्लिकेशन सगळ्या भाषेत देतात. संस्कृत तर कुठे नाहीये, पण संस्कृत इज द लँग्वेज ऑफ कम्प्युटर्स. कम्प्युटर्स आर बिल्ट ऑन संस्कृत, राईट? Yes. डेफिनेटली संस्कृतचं मी आय डोंट नो, अनफॉर्च्युनेटली मी संस्कृतचा एजंट कधी पाहिला नाहीये. I mean, if you tried it or not, because Sanskrit खूप कठीण language है. It's not straightforward, because I've learned Sanskrit till 10th, so I know how tough it is. And all our mantrochars are everything in Sanskrit, complex words being joined together. So you have all these researches in Sanskrit, because this Vedas and everything is written in Sanskrit. So you can be a guy who can transfer this Sanskrit Vedas into a language which everybody could understand, because Vedas are super physics and super chemistry, and we have a great heritage of these Vedas. So you can convert these Vedas into the language which everybody of us could understand. Yes. Yes, thank you, sir. Then Dr. Mrunal want to ask a question. She wrote, how we can use it in research, and any statistical analysis done by AI will be authenticate or not. Authentication in the sense, see, I have worked on a lot of manufacturing data where you do a lot of statistical analysis. Maybe you do a linear correlation with all these data parameters. So see, statistically analysis एक्सेल वर करता येते. आताही तिथे आहे स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस आणि खूप सारे फंक्शन्स पण आहे.
आता ते प्रोग्रामवर आहे, तर कॉन्सेप्ट बदलले नाहीये, पण आता ते स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस तुम्हाला पायथन कोडवर करता येते. राईट. तर ते वी कॅन डू इट. आय मीन सी, तेच मी म्हटलं की मॅथ्सच सॉफ्टवेअरचे पॅकेज तयार झाले आता, आणि ते खूप मोठा डेटावर ऑपरेट करतात, म्हणून एआय सक्सेसफुल होत आहे, बिकॉज आपल्याला त्याला सॉफ्टवेअरमध्ये कन्वर्ट करता आलं. नाही तर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये स्टॅटिस्टिक अनालिसिस, मीन मीडियन मोड, स्टॅटिस्टिक्सचे सगळे कन्सेप्ट, स्टॅटिस्टिकल रिग्रेशन, लिनियर रिग्रेशन हे होतच, हे करतच होते, पण त्याकरता पुष्कळ डेटा लागायचा. यू नीड लॉट ऑफ डेटा अँड यू नीड लॉट ऑफ मशीन पॉवर. आता लॅपटॉपवर पण करता येतं एआय. पहिले लॅपटॉपची पॉवरच नव्हती तेवढी एआय करायची. या Yes. Thank you, sir. Thank you. या Then our student Mihir wanted to ask a question that how can the AI's output be checked for factual correctness, especially in sensitive areas like medicine, law, finance, and military? Can you just say it again? I lost. Okay. How can the AI's output be checked for factual correctness, especially in sensitive areas like medicine, law, and finance, military? नाही, तर आता सी, ऑपरेशन सिंदूर जे होतं ना, इट वॉज अन कम्प्लीट सक्सेस ऑफ एआय प्लस सोल्जर्स प्लस इंजिनियर्स प्लस सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम. तर शेवटली जी आपण मिसाईल मारली आहे ती काही एआयने नाही मारली, आपण त्याचा जो ट्रॅक आहे तो एआयने प्रेडिक्ट केला आहे. तर शेवटली माईल आहे ते आपल्यावर डिसिजन आहे, की आता मला कोणी म्हटलं की बाबा तू डोलो 500 घे ताप आल्यावर, दॅट्स द डेटा इज सेईंग. पण डोलोची मला एलर्जी आहे, तो डेटा नसणार ना ऑब्विसली. मला डॉक्टरला माहिती आहे की आय एम एलर्जिक बिकॉज ही सीइंग फ्रॉम मी फ्रॉम चाइल्डहुड. डिसिजन मेकिंग आपल्याला थांबावी लागेल. हे फक्त रिकमेंडेशन सिस्टम आहे, औषध घ्या असं म्हणत नाही. मग देन युअर ह्युमन बायोलॉजी ऑल्सो कम्स इन टू पिक्चर. डिफेन्समध्ये पण सगळा कंट्रोल एआय वर जात नाही, कधी दिला नाही कोणी, बिकॉज शेवटली आपण जी मिसाईल ती केली ती सेकंड वर्ल्ड वॉरचे मिसाईल्स मारल्या त्या आपण त्या ड्रोन्सवर. तर एआय कुठपर्यंत आली? एआय हॅज रीच्ड टिल प्रेडिक्शन ऑफ द फ्लाइट ऑर द ड्रोन पाथ्स. लेटर ऑन द लाईन वी टूक इट ओव्हर अँड वी स्टार्टेड फायरिंग, बिकॉज ड्रोन डोळ्यांनी दिसतं, फायटर प्लेन दिसत नाही. मग तिथे इंटेलिजन्स पेक्षा तुमचा रडार टेक्नॉलॉजी येते. तर सगळ्या दूर एआय नाही आहे, कुठे कुठे मिसयूज एआय आहे, तिथे कुठे एआय पण नाही आहे. आणि हे सगळे कॉन्फिडेन्शियल असतात, हे पब्लिक डोमेन मध्ये नसतात की मी एआय कुठे वापरलाय. राईट. सेम विथ हेल्थ केअर रिकमेंडेशन सिस्टम आहे, कोणी पण ओन नाही करणार, बिकॉज डॉक्टरची सिग्नेचर गरजेची असते सगळ्या गोष्टी. करेक्ट. इंटरनल Yes. रिसर्च मध्ये युज होऊ शकते, पण अगेन रिकमेंडेशन. सपोज मी रिसर्च करतोय आणि माझ्याकडे 30 वर्षाचा डेटा आहे, तर मी 30 रजिस्टर्स पाहू नाही शकत ना. तर मी या एजंटला सांगेल की ओके मला 1985चा रिसर्चचा हे सेक्शन हवं आहे, इट विल पुल आउट आणि मग इंटेलिजन्स देईल. दीज आर ऑल रिकमेंडेशन सिस्टम्स. Yes, thank you, sir. Then Prajwal asking a question that, sir, what is the relationship of AI with mathematics, physics, and chemistry? Who handle AI? Acha, ha, okay. So see, what are the equations? So assume if you are from a technology background, we used to we learned Fourier transforms in the past. We had time series data, we have binomial theorem, time series extensions. Chemistry likewise, you have equations for chemistry as well, for say Joule's laws were there, right? Same with physics. So all these are packaged earlier. See, these were they had some tools and systems in the past which was not which was a proprietary. I mean, पायथन नी कोड नव्हता करत, ते प्रोप्रायटरी लँग्वेज होता. पण आता काय सगळं पॅकेज करून पायथन, आणि पायथन काय फास्ट लँग्वेज आहे, ती कंपाईल खूप क्विकली होती. तर ते आता सगळ्या त्या तुम्ही इक्वेशन्स पाहाल, वेबवर जाल तर त्या सगळ्या अवेलेबल आहे, की एक्सेल शीटला डिवाइड कसं करायचं, एक्सेल शीटला आरे मध्ये कसं घ्यायचं, मग त्या अरेच्या डेटाला 2 पार्ट्स मध्ये कसं करायचे, त्याचे सेक्शन्स कसे काढायचे, प्रोग्राम मध्ये पहिले मॅन्युअली करावं लागायचं. तर त्यामुळे सगळं एम्बॅड होऊन गेलं आहे केमिस्ट्रीच्या इक्वेशन्स आणि फिजिक्सच्या इक्वेशन, आणि मॅथमॅटिकल मॉडेल न्यूरल पण आले. त्यामुळे हे खूप क्विक झालंय सगळं.
because we are able to convert into technology. Yes, thank you, sir. Then most of our students are from village background, so they are not really such used to with AI. So they wanted from you that please suggest us some websites or some tools from where they can learn to how to use AI. Okay, so you just take their names, and what you do is I'll just send those links to you. You can forward it because there's so much of data available on the net. I'll just send you because I cannot pick and choose. I want something which is very easy to understand. So I'll give you very easy links to you. I'll send everything to you. Don't worry. I will send a literature to you as well. Yeah. Okay, sir. Thank you so much. Then for now, the question are ended. Okay. If anyone have a question, please raise your hand. Good evening, sir. Sir, may I ask one question, sir? Yeah, please go ahead. Don't. Sir, No. please. Sir, whatever the data interpreted by these AI tools, will it be plagiarized? Will it become under plagiarism? Oh yes. So it is very interesting actually. What happens is, so assume, see, anyways, what an AI agent does, it just collates the data from different sources, creates its own knowledge bank, and then it sends it, right? So what happens is, ideally it does not, but ideally it does not, copy paste. So suppose there is one document lying and it just not paste, it aggregates everything and give it to you. But what happens is nowadays, if somebody sends me a document, I have a tool, I insert that document on my tool, and it is clearly saying this is generated by AI. Correct. So, Okay. we have started doing this, and many people have started. So that originality is always checked. Okay. Fortunately slash unfortunately, because say, if you are a script writer of a movie and you put it on public, that whole data goes to Google, right? And it may happen that probably it gives you the exact script written by you. So if Yes. it is copied and if you have been registered it earlier, you can definitely sue this guy. Otherwise it will not come. But people know, I know that somebody is giving me a piece of information, I check whether it is done by AI. So if somebody is sending me an image, I put into a tool, it says ki yaar ye to AI se bana hua hai. So Yes. yeah. Barabar. So there are ways to know, because a lot of figures, even the figure what I've shown to you, I have created from a agent ki hai, right? Okay. Yes. So Yes. Yes. it's the way it is, because originality is not going to go off. It's all about, you cannot make Google rich. Rather, whenever you use AI, locally banao usko. Google ko mat do, nahi to Google smart ho jayega. And Google is not an Indian company. It's an American, right? Yes. Perfect. Thank Yes, you. sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Yes, thank you so much, sir. And as we have a time bond, so we are going to conclude this session. So I request Ashwini, please conclude. महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहायता केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असणारा करिअर कट्टा या उपक्रमाअंतर्गत आज करिअरच्या संधीचा महामेळावा या ऑनलाईन प्रशिक्षण कोर्सच्या आजच्या सत्राप्रसंगी उपस्थित सर्वांचे खूप खूप आभार. आज आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केल्याबद्दल आजचे मार्गदर्शक सर यांचे विद्यार्थ्यांच्या तर्फे मी मनापासून आभार मानते. तसेच या उपक्रमाच्या माध्यमातून पदवीसाठी प्रवेश घेतलेल्या आणि घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी व पालकांना उच्च शिक्षणात पाऊल ठेवताना महत्त्वपूर्ण जाणीव करून दिल्याबद्दल आणि त्याचप्रमाणे उत्तम व्यक्तींचे मार्गदर्शन मिळविण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल करिअर कट्टा अध्यक्ष माननीय श्री यशवंत शितोडे सर यांचे मनस्वी आभार. त्याचप्रमाणे आजच्या सत्रास उपस्थित सर्व प्राध्यापक वर्ग, विद्यार्थी आणि पालक वर्ग यांचे खूप खूप आभार. आणि या सर्व नियोजन आयोजनासाठी सहकार्य करणाऱ्या करिअर कट्टा टेक्निकल टीमचे खूप खूप आभार. आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने आजचे सत्र इथेच संपले असे मी जाहीर करते. धन्यवाद. Dhanyavad. Thanks for the time, everyone. Thank you so much. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you so much, sir, for your wonderful insight. Thank you. Yeah, thank you so much.